Momentum P is equal to m into v. Momentum is not denoted by m, it is denoted by p. It's a symbol of momentum. That's why momentum का formula क्या है? P is equal to m into v. Here m is the mass and v is the velocity, right? फिर मास की डायमेंशन क्या आएंगी? m1 और वेलोसिटी की जैसे हमने पहले भी बताया था l to the power 1, m to the power 0 एंड t to the power -1. उसको कलेक्टिवली लिखना है हमें. अब l to the power 1 है हमारे पास, m to the power यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में 0 है लेकिन पहले ब्रैकेट में m to the power 1 है तो 0 + 1 1. दैट्स वाई m to the power 1 or t to the power -1 as it is. So its dimensions collectively can be written as in a square bracket l to the power 1, m to the power 1 and t to the power -1. What is the SI unit for that? Its SI unit is kilogram meter per second. Kilogram meter per second, which is denoted by kg meter per second. अब इसमें kg क्यों आया? क्योंकि इसमें मास भी आया. मास आया ना, m to the power 1 लिखा है हमने, दैट्स वाई kg आया. l to the power 1 है इसलिए मीटर आया क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है, और t to the power -1 है, दैट्स वाई सेकंड जो टाइम का यूनिट है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा. सो SI यूनिट क्या आएगा इसका? kg मीटर पर सेकंड. ओके. आता इतके सगळे एक्झाम्पल्स पाहिल्यानंतर तुमचे डोक्यामध्ये असणारे जे काही क्वेश्चन्स होते, व्हॉट इज इन बाय डायमेन्शन्स, डायमेन्शन्स यूज कुठे होतात, त्याचा उपयोग काय आहे, हे बरेचसे क्वेश्चन्स होते ना. तर ते सगळ्या क्वेश्चन्सचा आन्सर आता तुम्हाला बऱ्यापैकी मिळालं असेल, तुमच्या आयडिया बऱ्यापैकी क्लिअर झाल्या असतील. आपण डायमेन्शन्सवरून युनिट्स कसे काढू शकतो किंवा युनिट्स दिले असतील तर आपण त्याच्यावरून डायमेन्शन्स कशा ठरवू शकतो हे आपल्याला आता या एक्झाम्पल्सवरून बऱ्यापैकी समजलं असेल. ओके. फोर्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फोर्स? इट्स F is equal to m into a, where m is the mass and a is the acceleration. What are the dimensions for mass? It's m1. And what will be the dimensions for acceleration? It's l1, m0 and t to the power -2, as already we have seen. So collectively how can we write this? Collectively we can write this in a square bracket, l to the power 1, m to the power 1 and t to the power -2. Its unit is Newton. What is the unit for force? It's Newton, and which is denoted by capital N.